Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the chapter Law and Social Justice, and under this chapter, we are doing about the Bhopal Gas Tragedy, which which occurred on 2nd of December 1984 in Bhopal. We see that we have discussed about it that Union Carbide company, which was an American company, it had opened a unit in Bhopal with the permission of the government, and it was a pesticide producing company. And what happened that on the midnight of 2nd December 1984, methyl isocyanate gas started to leak from this plant, and this MIC, methyl isocyanate, was a highly poisonous gas. And then we have this uh, Aziza Sultan, who was a survivor, and she was saying what happened that night at about 12:30 a.m. She woke to the sound of her baby coughing badly, and what she found that the room was filled with a white cloud. And then she heard that people were shouting, run, run. And then she also started coughing. And when she was breathing in, it seemed that she was breathing in fire, and her eyes were burning. So this is the statement of a survivor. And we see within 3 days when this tragedy occurred, so within 3 days more than 8,000 people were dead and hundreds of thousands were maimed. This was the condition. And we see that those people who were exposed to this poisonous gas, they came from poor working class families, of which nearly 50,000 people are today too sick to work. The the they, they are they are uh, the impact of that toxic gas is still felt today. And the people who survived, they have developed, many of them developed severe respiratory disorder, eye problem, and other disorder. And children also developed peculiar abnormalities like genetic problems occurred in the babies. So we see, this is the picture. This members of Union Carbide employees union protesting against what happened on that night. Then this gas victims with the gas relief minister. The He's the minister, and they are with the minister. They are expecting some relief from the government. And this is the bags of chemical lye strewn around the यूसी प्लांट. यूसी प्लांट के चारों तरफ ये पेस्टिसाइड्स जो थे उनको बनाने वाले जो केमिकल्स थे वो सारे आपके दिख रहे हैं. एंड दिस इज द स्ट्रगल फॉर जस्टिस, है ना. उसके लिए लोग, जस्टिस के लिए पीपल आर स्ट्रगलिंग. सो नाउ वी सी what is the worth of a worker. So first of all, we will try to understand about the worth of the worker, and how the government is responsible for all these through that Bhopal gas tragedy only. Okay, and first of all, the question is, why did the Union Carbide set up its plant in India? है ना. यूनियन कार्बाइड जो प्लांट कंपनी थी, उसने इंडिया में अपना प्लांट क्यों सेटअप किया. ठीक है. सो देर इज सम रीजन बिहाइंड इट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट the main purpose of foreign companies to come to India is cheap labor, because we have a very large population, and there is lack of employment opportunities. So unemployment is a very big problem of our country, and that is the reason we find that cheap labor is available in our country. And this becomes one of the most important reason for the foreign companies to come to India.
And if these companies they set up their units in developed countries, then they have to pay bigger amount to the workers. And if suppose a Union Carbide company set up its unit in US only, so in US when the company will engage the workers, it has to give uh, higher amount of money to the workers. You know, but when the factory is in India, then the laborers are paid a very little amount. If we compare it uh, to the workers who are paid in to the workers uh, who are working in US and other developed countries, है ना? तो जो इंडिया जैसी पुअर कंट्री है, अगर यहाँ पर लेबर को वो एम्प्लॉय करते हैं तो दे विल गिव देम स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, है ना? And not only this, they will pay less, and uh, they will make them work for more longer hours of work, है ना? पैसा कम देंगे और ज़्यादा लंबे टाइम तक काम कराएंगे, जबकि इफ वी सी द कंडीशन इन द डेवलप्ड कंट्रीज, देयर दे विल हैव टू पे more amount of money and their working hour will be shorter. But in our country, they work for longer hours. And then other facilities are also will also not be given to the workers. Other facilities like housing facilities, and there is no need to give housing facilities to the workers, because here it is not given. The workers work only on wages, है ना? उनको कोई फैसिलिटीज नहीं मिलती है. तो इन दिस वे द कंपनी कैन सेव कॉस्ट, and when it is able to save the cost, then what will happen? Their profit will increase, as we have discussed in the beginning of the chapter, that any private company wants to earn profit. Any individual or group of individual or private company, the main purpose of any economic activity by them is to earn profit. And in order to earn profit, how what they will do, they will cut the cost price, and this is one of the most important way through which they can cut their cost price. By giving lesser wages to the labor, by engaging them for longer hours of work, है ना? And then not giving them other facilities. Okay, now we see there are other means also, there are other ways also through which they can cut their cost. And we can see that these are more dangerous. Like अगर आप लो वेजेस दे रहे हो और लॉन्ग वर्किंग आवर्स उनसे ले रहे हो, तो उसके तो इम्पैक्ट होंगे, बट इट दैट इज नॉट डेंजरस. बट नाउ वी फाइंड दैट देयर आर सम डेंजरस वेज through which the company can cut its cost. Okay, so what are the dangerous ways? First of all, lower safety measures, है ना? Lower safety measures are used as way of cost cutting. This is very important, है ना? Lower safety measures are used as a way of cutting cost. In the Union Carbide plant, every safety device was malfunctioning. जो भी सेफ्टी के डिवाइस थे यूसी में, यूसी का प्लांट जो भोपाल में था, दे वर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, और दे वर शॉर्ट इन सप्लाई ऑल्सो, है ना? वो सप्लाई में या तो कम थे या फिर वो सही से काम नहीं कर रहे थे. If we see, we have some data also, like between 1980 and 1984, the work crew for the MIC plant was cut in half from 12 to 6 workers. जो MIC के लिए जो वर्क क्रू था, उनको 12 होते थे पहले एक क्रू में, उसको कम करके 6 कर दिया गया. ठीक है? So this was one of the cost cutting measure adopted by the company. Then we see the period of safety training for workers. It was also brought down from 6 months to 15 days. In order to work in a pesticide producing company, the workers must get safety training of about 6 months. It is the rule.
But here in India, this 6 month was brought down to 15 days only. That was also a way to cut the cost. And then we see that this night shift में भी workers चाहिए होते थे, but this post of shift workers for the MIC plant was abolished. Night shift में कोई worker होता ही नहीं था. All these are the measures to cut the cost price in order to gain more and more profit. है ना, ये सारे जो काम किए गए वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने के लिए, कॉस्ट को कम करने के लिए ये किया गया. ठीक है. So, this is the condition. This is the main reason why they establish the set up their unit in India. Cheap labor मिल गया. उसके बाद आपको कोई भी सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है. You can do away with all the safety measures, है ना. And it cannot be done in the developed countries. If you are your unit is in developed countries, then you will have to follow all the safety measures. You will have to give proper wages to them. You have to give proper all the facilities to the workers, है ना. But if in India, not only in India, but if you are in a poor country, in a developing country, then the condition is completely different. Okay, and now we will see how we can compare between the safety system which was working in Bhopal. यूसी की जो भोपाल में यूनिट थी वहाँ जो सेफ्टी सिस्टम था, और यूएस के जो अदर यूएस में जो यूसी की जो यूनिट थी वहाँ जो सेफ्टी सिस्टम था, उन दोनों में कितना डिफरेंस है. देन वी कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट वाज हैपनिंग इन इंडिया. So you can see what happens in West Virginia, which is in USA. There is a computerized warning and monitoring system, which is there to warn the people if something wrong is to happen, some kind of problem is there in the machine or in the factory. For that, computerized warning and monitoring system is there. And we see that in UC plant in Bhopal, it was relying on manual gauges and human senses to detect गैस लीक हो रहा है, या आप ह्यूमन सेंस से, आप स्मेल से इसको समझिए कि गैस लीक हो रही है. यहाँ पर कोई कंप्यूटराइज्ड वार्निंग या मॉनिटरिंग की सिस्टम नहीं काम कर रही थी, जबकि वही कंपनी, उसी कंपनी की यूनिट जो वर्जीनिया में है, वहाँ पे सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, मॉनिटरिंग है. जैसे ही लीक स्टार्ट होगी वो सायरन बज जाएगी और तुरंत उसके लिए एक्शन लेना है. बट यहाँ वो चीज़ नहीं थी, है ना. इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान भी वहाँ पर काम में कर रहा था कि अगर उस तरह का कोई टॉक्सिक गैस का लीकेज होता है तो कैसे इवैक्यूएट किया जाए, लोगों को कैसे वहाँ से हटाया जाए. तो ऑल दीज वर लैकिंग इन आवर कंट्री. और ये क्यों लैक कर रहा था? क्योंकि इससे उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा था, है ना. तो दैट इज द रीजन दे सेट अप देयर प्लांट्स इन कंट्रीज लाइक इंडिया, है ना. तो ये हम देखते हैं कि क्यों ऐसे शार्प डिफरेंसेस हैं सेफ्टी स्टैंडर्ड में, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में क्यों इतने शार्प डिफरेंसेस हैं. And even after the disaster happened, why was the compensation to the victims so low? Disaster हो गया, उसके बाद जो विक्टिम्स हैं उनको कंपनसेशन तो देना चाहिए था, जो कि सही ढंग से नहीं मिल पाया, है ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि वाई इस तरह के चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्यों सेफ्टी स्टैंडर्ड में इतने डिफरेंसेस है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई टोल्ड यू कि वी हैव अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन एंड देयर इज लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज. सो इट इज़ वेरी इजी फॉर अ वर्कर टू रिप्लेस अनदर, है ना. जो वर्कर्स हैं उनके पास नेगोशिएशन का पावर नहीं है. दे डोंट हैव द पावर टू बार्गेन, दे डोंट हैव द पावर टू नेगोशिएट, है ना.
तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब हमारे पास नेगोशिएशन पावर नहीं होगा तो हम हमारा जो एम्प्लॉयर है वो हमें एक्सप्लॉइट कर सकता है और करता है ना, because workers are ready to work in unsafe condition because they just want money. They just want money to fulfill the basic needs of their family. So safety measures is not a concern for them. वो उसके बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। और दिस इज द रीजन द एम्प्लॉयर दे इग्नोर सेफ्टी इन वर्क प्लेस बिकॉज दे नो कि अगर सेफ्टी को हम इग्नोर करेंगे तो भी वर्कर्स आएंगे वहां पे काम करने के लिए, है ना। So we find that even so many years after after this tragedy there are regular reports of accidents in construction sites, mines or factories due to the callous attitude of the employers. They have this attitude, they don't give any attention to the safety of the workers because the life of the worker has no worth in the eyes of the employer, and we can see in the eyes of the government also because it is the government who is ultimately responsible to give justice to the worker. तो वर्कर के लाइफ की अहमियत ही नहीं है, दिस इज द मेन रीजन, है ना। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि सबसे बड़ा रोल जो है वो किसका हो जाता है, गवर्नमेंट का हो जाता है। गवर्नमेंट इज द लॉ मेकर, गवर्नमेंट इज द लॉ एनफोर्सर, है ना। लॉ को बनाना, लॉ को इम्प्लीमेंट करना, एवरीथिंग इज डन बाय द गवर्नमेंट, and it is the duty of the government to ensure that the people are given this right to life, the people are enjoying their right to life which is given by article 21 of the constitution. There should not be violation of this right to life. It is the sole responsibility of the government to see that the people are enjoying their right to life. So what was the government doing when there were such blatant violation of safety standard in the UC plant? As we have just now we have discussed that no computerized monitoring system was working there. It was left for human senses. देन नाइट शिफ्ट वर्कर्स की पोस्ट को हटा दिया गया, इट वॉज abolished. नॉट ओनली दिस, जो सेफ्टी के लिए जो 6 मंथ्स का ट्रेनिंग पीरियड था उसको घटा के 15 डेज का कर दिया गया। तो ये सब कुछ हमारी कंट्री में एक बाहर एक दूसरे देश की जो कंपनी है वो आकर ये सब कुछ कर रही है, उसको ये सब कुछ करने के लिए कौन अलाउ कर रहा है, हु इज गिविंग परमिशन टू दिस कंपनी टू डू ऑल दीज, to violate the safety standard, why it is not following the safety standard, and what the government was doing when all these were happening. So this is the responsibility of the government, and this is the failure of the government. Bhopal gas tragedy was the failure of the government, है ना। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी दैट एक तो हमारे यहाँ सेफ्टी लॉज बहुत ही लैक्स हैं, मतलब वी डोंट पे अटेंशन, वी डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू सेफ्टी लॉज क्योंकि हमारे यहाँ ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं होती है, सीधी सी बात है। सेफ्टी लॉज लैक्स है, बहुत ही लिबरल है, आप उस सेफ्टी लॉ में कुछ भी फेरबदल कर सकते हैं, यू आर कंप्लीटली फ्री टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर ओन कन्वीनियंस, है ना। और जो भी सेफ्टी लॉ है वो उसको भी इन्फोर्स नहीं किया जाता है। तो दिस इज द प्रॉब्लम विथ आवर कंट्री। अब हम क्या देखते हैं, जब यहाँ बात हो रही है यूसी की, यून कार्बाइड कंपनी की, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने इस बात के लिए मना कर दिया था कि ये प्लांट जो है वो हजार्डस नहीं है। उनका कहना था कि द प्लांट इज नॉट हजार्डस। हैज़ार्डस मतलब जो हेल्थ के लिए आपके बहुत खतरनाक होता है। अगर कोई भी जैसे कोई भी जो यूनिट है, फैक्ट्री है, जो कुछ भी उसका काम है, लाइक यूसी वाज प्रोड्यूसिंग पेस्टिसाइड्स, सो पेस्टिसाइड प्रोड्यूसिंग कंपनी और फैक्ट्री इज अ हैज़ार्डस प्लांट, क्योंकि ये जो लीकेज हुआ
उसके होने का पॉसिबिलिटी बिल्कुल रहता है। टॉक्सिक मटेरियल वहाँ पे यूज़ हो रहा है, टॉक्सिक केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, तो देर इज़ हाई पॉसिबिलिटी दैट द टॉक्सिक केमिकल कैन लीक from the plant. And if the plant is situated in a populated locality, then it will be a great threat for the whole population who is living nearby. And this is what happened in this Bhopal gas tragedy. अगर वो अगर उसको गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो रिस्पॉन्सिबल थे, अगर वो उसको हैजार्डस बोल देते कि दिस प्लांट इज हैजार्डस, दे इफ दे हैव recognized the plant as hazardous, then what could have happened कि this that plant was not situated in a populated locality. बट चूंकि गवर्नमेंट ने उसको हैजार्डस कहा कि नहीं ये हैजार्डस नहीं है, तो क्या हो गया, हैजार्डस नहीं है तो वो प्लांट जो है वो जिस जगह में सेटअप किया गया वो पॉपुलेटेड लोकेलिटी था। ओके, और पॉपुलेटेड लोकेलिटी होने के कारण इतनी बड़ी लॉस ऑफ लाइफ और ट्रेजिडी तभी भी होती है। अगर पॉपुलेटेड लोकेलिटी में वो नहीं सेटअप होता तो ट्रेजिडी तो तभी भी होती लेकिन डेथ्स कम होती, है ना। तो इसमें ये हुआ कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कह दिया कि ठीक है हैजार्डस नहीं है, और पॉपुलेटेड लोकेलिटी में उसको बनाने का परमिशन हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि जो म्यूनिसिपल ऑफिसर्स कुछ थे भोपाल में, भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था, है ना। उनका ये ऑब्जेक्शन था कि ये जो एमआईसी है इसका प्रोडक्शन यूनिट जो है वो सेफ्टी का वायलेशन है। इट इज़ द वायलेशन ऑफ सेफ्टी in if this unit is being set up in the populated locality. बट यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या कहा, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द गवर्नमेंट, दैट द स्टेट नीड्स द कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट ऑफ द भोपाल प्लांट विच प्रोवाइड्स जॉब। हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि फॉरेन कंपनी हमारे कंट्री में आके अपना यूनिट्स खोल रही है। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। हमारी कंट्री में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, है ना। तो ये जो चीज़ें थी इसको नज़रअंदाज किया गया। वो हजार्डस था, स्टिल उसको हजार्डस नहीं कहते हुए पॉपुलेटेड लोकेलिटी में जगह दे दी गई। और उससे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट का ये आर्गुमेंट हो रहा है कि इससे हमारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, है ना। सो ये चीज़ें जो हैं, इस तरह से चीज़ें जो हैं वहाँ पर हो रही थी। वी विल कंटिन्यू विद दिस डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास।